Pakistan has fallen victim to numerous natural disasters in the past decade. One of its worst forms are the repeated floods that have been ravaging, costing the economy billions. Though, with pain in due course and time, these losses can be recovered. But the real loss has been incurred to the already poverty-stricken population of the country. The population living in the remote areas of Punjab and Sindh tell the sad story of harsh realities. How the merciless torrents destroyed homes, swept away crops and cattle, leaving the communities displaced with no food or shelter. हाले तक मेरे को कुछ नहीं है, मैं इन्हें को घर देवा, मैं केरे तरीके से इन्हें को उठावा, कपड़ा ना लेवा, गाना गट्टा ना लेवा, ट्रंक पेटी ना लेवा, हाथ टिका ना लेवा, मेरे को कैसा कह दी जी। ये दो मकान मेरे डट्ठे किनो पानी उंदो अडन में किते दुबा वञी जाचींदा वाह ॿिया सभु बंदि थी विया हुया। पियो पाणी पियो हूंदो किते बनियुनि में वठी कपिड़ा धोईंदा पींदा उहो कपिड़ा उन में धोईंदा। Kipro of district Sangar in Sindh was left deserted of any shelter for the communities to live in or any livelihood to depend on in the wake of the floods of 2011. District Rajanpur of Punjab, prone to floods due to its topographical complexity, was devastated in 2013, with more than 100,000 cusecs of floodwater, affecting more than 66,000 people. District Jhang of Punjab, hit by a massive wave of floods in 2014, due to the discourse of rivers Jhelum and Chenab, was left submerged, its population alienated from the rest of Pakistan due to lack of access by road. साफ पानी पीने का नहीं था, उसमें बीमारी भी फैलती थी, दस्त भी होते थे, जो पानी जो इसमें जरासीम भी होते थे। बंगले थे, कहिंदे पत्थरे थे, रोड में ऐसा निके निके बच्चे जाते ऐसा लेटे ऐसे जी बगैरा दान बगैरा लगे हो साड़ी बड़ी फसल नुकसान हुई। Cut off from the rest of Pakistan and with no means of communications, the prayers of these neglected districts were answered when Pak Mission Society came to provide help and support according to each district's needs so that the communities can get back to normal life. Scattered community है और needs ज़्यादा है, इसमें उनको लोगों को टैकल करने में, लोगों को मैनेज करने में हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश आए हैं। इनके हालात ऐसे थे कि इनको सफाई सुथराई के मसले में कोई चीज़ों का इनको इतनी मालूमात नहीं थी, क्योंकि इनको कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तो हमने कोशिश की है कि हम जो दूर दराज के इलाके थे जिन तक अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई असिस्टेंस नहीं पहुंची, तो हम उन तक पहुंच सकें। With the objective of empowering the communities to take charge of their own lives with initial support, PMS conducted a careful on-ground assessment to identify and strategize interventions for each district. वन रूम सेंटर रूम है, एक उसमें लेट्रीन शामिल है जो लोगों तक पहुंचा रही है। 220 यूनिट्स इनके यहाँ इन्होंने ऐसी जगह पे पहुंचाए हैं कि जहाँ गवर्नमेंट को भी एक्सेस जो है ना बड़ी मुश्किल होती है। With the support of German Foreign Office and BMZ through Humedica International, simultaneous interventions were initiated by PMS in districts Jhang, Rajanpur and Kipro. In Kipro, after the reconstruction project, PMS continued its development project. 15 villages were targeted where the overall hygiene was improved rapidly by providing hand pumps and wash places, especially for women, to lessen their workload. In the awareness-raising sessions to the community, adolescents' hygiene for young girls was made a priority. पाक मिशन सोसाइटी ने वॉशिंग एरिया कंस्ट्रक्ट किए हैं 15 गाँव के अंदर, और उन वॉशिंग एरिया के अंदर 6 वाटर स्टेशन बनाए गए हैं, 6 टैप्स लगा दी गई हैं और उसके साथ एक टैंक है। पहले वाली जो हमारी सफाई थी ना, उसी अब जो हमारी सफाई है, इसी में बड़ा फ़र्क है।
30 model latrines were constructed in the vicinity of villages where latrines were either non-existent or were not functional. 30 community-led total sanitation sessions were also conducted, where through various activities and exercises, the community was sensitized to the hazard of unhygienic practices. हमने यहाँ पे प्रोग्राम किए जिसमें इंटरैक्टिव थिएटर है, CLT सेशन है और ख़ास तौर पे फीमेल हाइजीन सेशन। गांव के इर्द गिर्द पीले रंग की मदद से हमने उस जगह की निशानदही करवाई है। फिर हम लोगों को लेके गए हैं ट्रांजिट वॉक के ज़रिए वहाँ पे जहाँ शिट किया होता है, अक्सर गांव के अंदर और गांव के बिल्कुल बराबर में। लोगों को ये फ़ायदा हुआ है कि वो बहुत सारी बीमारियों से बचने का उनको तरीका आ गया है। To make the intervention appealing, 30 community interactive theaters were conducted, 2 in each village as a tool to mobilize, motivate, and aware community regarding personal hygiene and importance of clean drinking water. Sessions conducted in Sindhi and Gujarati attracted a huge audience, helping to maximize the understanding of the community through their local languages. असांखे सेखारी विया इहो आया डामे वारा असांखे सेखारी विया चए हुनमें असीं बीमारियुनि सां बचियल आहियूं इहो साफ़ सुथरनि जा इहे सेखारियो चई हुन बचियल असीं आहियूं. In Rajanpur, a 5-month-long relief response for over 3,000 flood-affected families was conducted. After completion of relief project, detailed assessment was conducted in Rajanpur to find the unmet need of the area. On the basis of assessment, Rapid Recovery Project was initiated, which focused on shelter, wash, and livelihood schemes for flood-affected communities. राजनपुर रैपिड रिकवरी है, इसमें हमने 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे, शेल्टर, वॉश और लाइवलीहुड। जो लोग मुतासिर हुए थे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और वो अपनी जो है ना लाइफ को दोबारा कंटिन्यू करने में कामयाब हुए। सारे नाल इन्हें तावन कीते, साकू कमरे दीते ने, असां इन्हें कमरे दे विच रैश कीती पियूं। Awareness-raising sessions were clubbed with the distribution of the health and hygiene kits, improved wash facilities, and water pumps for clean drinking water, so that the community could combat waterborne diseases, which were affecting the community's health, especially women and children. In Jhang, PMS was the first organization to reach for the support of flood-affected communities. A 4-month relief response was conducted, where more than 5,500 families were facilitated and provided with food and non-food items for 2-month consumption. The food items consisted of flour, lentils, spices, cooking oil, wheat, and rice to overcome food insecurity, whereas the non-food items consisted of basic necessities including hygiene kits, so that the community, especially women and children, can prevent themselves from the waterborne diseases in the aftermath of floods. PMS इदारा आया सर, साढ़े बच्चे बहुत मारे हैं, इन आते सानू बचाया। ये इन जो यही है बर्तन शर्तन ही नहीं देते, राशन पानी ही नहीं देते। Today, the life in Jhang, Rajanpur, and Kipro is not just a story of successful interventions, but a story of survival and resilience. The community's sheer commitment to take every challenge head-on in order to relive their right to life, with Bach Mission Society making sure that they leave the communities with rendered joys in everyone's heart. बाबा जी PMS वारनि जा थोरा त आहियूं, इहे हिननि जा लख लख महिरबानियूं आहिनि ऐं हिननि असां ते माना इहो वॾो अहसान हिकिड़ो करे छॾियो आहे।